Okay, very important topic again. Uh, Let me start it through. Okay, now why it is named as eighth generation warfare. So you have already studied first gen, third, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So we'll not discuss again that what is that. Why I'm talking about this particularly. Let us see this. Okay. Few years back, थोड़े साल पहले थोड़े साल पहले बहुत सालों से the first you can fight with someone is the hand to hand combat. Okay. अगर आपको किसी के साथ लड़ना है यू हैव टू बी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था ठीक है तब पर जो भी मतलब जो भी हो सकता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट ओके second comes under the military level combats. So I'm not discussing the generations but I'm just basically describing how it to look like. Okay. Now coming to this military levels, we all know that the military level, two militaries fought with each other called as a military level combat. Okay. Now coming to this nuclear warfare, which is very rare, but of course, um, धमकी बोलो कुछ बोलो मिलता है of course. It is very rare. Coming to the biological, this is so in today's era. If we see, so if two warfare are combined and they are not like ऐसा है कि देखो दो वारफेयर अगर मैं बोलूँ कि जो कंबाइन हो रहे हैं आजकल तो बहुत ही बुरा नुकसान कर रहे हैं ठीक है ह्यूमंस का these are the biological warfare again what is biological warfare is nothing but it is कि जैसे हमने बहुत सारा में कोविड देखा हमने इबोला देखा ठीक है सो व्हाट वी डू इज समथिंग लाइक कि हम एक वायरस बनाते हैं उसे बायोलॉजिकली जूनोटिक बनाया जाता है ताकि वो तो ज़ूनोटिक बनाने का बेसिकली मीन क्या है? देखो मैं आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट कि अब वो नेचुरली क्रिएट हो ही नहीं है वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन ज़ूनोटिक बनाए जाने का मीनिंग क्या है? तो ज़ूनोटिक बनाए जाने का मीनिंग है जो बेसिकली एनिमल्स की कैटेगरी है ठीक है एनिमल्स कम्स अंडर दी जैसे कि अब बोलो एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ कोई भी बैट्स हो गए या फिर फ्लाइंग एनिमल्स हो गए नॉन फ्लाइंग एनिमल्स जो भी एनिमल्स यू कैन एज्यूम ठीक है उनमें डाल दिया वो वायरस ठीक है then if it is zoonotic it will directly come and mess with the humans ठीक है so that is happening from the last 2-3 decades now coming to this chemical warfare this is basically to chemically hurt someone like gases की मदद से uh, basically you can also say ना one more second okay. Okay, now if we see, so this video is going to be a little bit detailed, so I have to stay tuned to get easy to get the main idea what I am trying to say. Okay, coming to this, if you see, this is a chemical warfare. What is this? Basically, you have to put some X amount of chemical, X name of chemical, कोई भी नाम का chemical आप बनाओ, उसको आप देखो उसको आप वाटर लाइन्स में डाल दो वाटर बॉडीज में डाल दो फॉर एग्जांपल आपने उसे एक नदी में डाल दी जहाँ से पानी जाता है बहुत लोगों को ठीक है पुट इन समथिंग लाइक रिवर और वाटर बॉडीज सो वहाँ से जो पानी जाएगा दैट विल डायरेक्टली गो टू द ह्यूमंस अगेन तो उससे होगा क्या उस केमिकल से उससे उनसे बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे देखो बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब कि बेसिकली they will get some of type of disease maybe skin disease lung cancer and whatever you can assume the rest okay whatever this chemical is designed to do coming next
information warfare. So these two are highly dangerous. Of course, you will like मैं physically hurt करते हैं. जैसे कोविड था, आपको sneezing या फिर जो भी problems हुई उसके कारण you have to go to the death bed. So it's that much hurt. So it is basically a biological warfare. ठीक है, so what happens is that उसको किसी एनिमल में डाला गया, then मैंने also it is not basically directly एनिमल में डाला गया, मे बी डायरेक्टली मैन में डाल दिया हो, ठीक है, तो बेसिकली मैन में डाल के एनिमल में डाल के उसको ट्रांसफर कराया गया किसी न किसी थ्रू टू थ्रू मैन एंड वो कंटेमिनेट होते गए, फिर वन से चेन बनती गई, इट्स लाइक एवलांच होता गया, तो इट्स द चेन, basically it's like that. So it goes like this avalanche. Of course, I just need it to support. So it looks like this. Of course, you can see now कितने chains बनते जा रहे हैं. So it happened like this. Now coming to nuclear warfare, very rare but happened. Of course, Hiroshima Nagasaki. Military also happened, and also it is like currently, if you see Israel, Palestine, and Russia, Ukraine, so it is happening right now. Nuclear, of course, biological, of course, chemical, of course. Now, coming to the, of course, the information warfare. When we are talking about the information warfare, what is it? It is something like put an agenda, put an agenda of a particular thing. Like you have to put your country, you have to put your or represent your country very well. So we'll just invest in something like this. Information warfare. You have to spread some news. So let's viral it in on this platform YouTube. This is the next platform again. Twitter, Facebook, Snapchat, etc. etc. So they are what we call nuclear war. Nuclear, what we call the nuclear. Let me just erase it first of all. So, okay, this is not okay. Now coming to this. So these are called nuclear weapons. Are called weapons of mass destruction. Why? Because if you see now, you will put one nuclear यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम का जो भी मटेरियल होगा, थोरियम यूरेनियम जो भी एक्टिवेटर होगा, ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय डेफिनेटली. बॉम्ब अगर 1 किलोमीटर के एरिया डिस्ट्रॉय करता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब 50 किलोमीटर के एरिया डिस्ट्रॉय करेगा. बट उसके साथ क्या होगा कि 50 किलोमीटर तो आप भूल जाओगे, कहीं दिखने वाला है, प्योरली राख, ठीक है, कैप्ड ऑफ कोर्स द बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वो नहीं जलेंगे, बट ऑफ कोर्स नुकसान तो होगा. मतलब मैं ह्यूमन काइंड, दिस इज ह्यूमन ना इन दिस 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, इट विल बी गोइंग टू बिकम ऐश. एंड the the saying is that the destruction during the nuclear attack is just the premiere. The main things happens after that, the after effects. The air becomes too polluted, it's chemically polluted, can't even like inhale the air, it having toxic substances, it will directly die. Or what happens is that if you go with this, you will get some disease. Okay? Definitely. So if someone has to rescue you, they or you should also wear some of the particular uh, what we call the equipments for jackets, etc. The suits basically, hazmat suits, etc. Basically to protect from the radiation. तो उसके बाद जो radiation होते हैं nuclear warfare के बाद, that is very different and it's a very dangerous thing, of course. Nowadays, what is the now if nowadays we talk present scenario, the mass destruction के जो weapons हैं that are Facebook, this, nothing but X amount of वायरल चीज़ें आपको आप कर सकते हो. उसी कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उसको वायरल 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है. So that's why, and you will put some pressure. Basically what happens, पहले ये प्रेशर डालता था, आजकल ये प्रेशर डालता है. So basically this. Okay. Okay.
eight generation warfare. So next warfare is not none of these that we have discussed. These ones इनकी वजह से नहीं मुश्किल होगा. Now, it is not going to start in next or upcoming year. ये जो आने वाले साल है उनमें start नहीं होगा. It already started from years back. Okay, let's see what is that. So these are not happening right now. ठीक है. मतलब basically हो रहे हैं but I'm talking about the future point of view. क्या हो सकता है future में? No, it already happened. It's the foods that you are eating nowadays. Okay, now let us see what is it. Now, if I say कि it is the food, so what does I mean it? I'm not meaning that you are directly saying कि food की वजह से हो रहा है. No, ingredients you are using. So neglecting the traditional one, you are eating some junk and other varieties. What are they? I just want to tell you that कि just think what you're eating and what ingredients do you have. ठीक है. So calorie dense foods तो देखो बेसिकली क्या है. Okay, basically let's talk about this first. People say sugar is bad. Of course it is bad. एंड इफ यू से कि आपको ओनली टेबल शुगर जो खाने से होगी, ठीक है, टेबल स्पून शुगर जो खाने से शुगर है डायबिटीज होती है, दैट्स अ मिथ. व्हाई? बिकॉज व्हाट आर यू ईटिंग नाउअडेज? व्हाट आर यू ईटिंग? यू आर ईटिंग द फ्लावर्स जो भी है मैदा खा रहे हो आप. ठीक है, आप कब से खा रहे हो उस चीज़ को? आप ऐसे ऐसे नमक खा रहे हो दैट आर नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिमालयन पिंक सॉल्ट और एक्सेट्रा. You are eating the that Ajinomoto etc that are directly hurting your bones. So basically what is happening, the ingredients, such kind of ingredients are put into your diet a way far back, 20, 30, 50 years back. That in such a way what is happening, that they are making your inner systems weak day by day. What does it mean? सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं आप कैसे, दैट इज आज आपको अच्छा लगा, कल आपको अच्छा लगा, एक हफ्ते बाद अच्छा लगा, एक साल बाद तो भी अच्छा लग रहा है, बट योर बॉडी इज ड्रास्टिकली चेंजिंग. ठीक है, स्लोली 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 आफ्टर 5 years यू गेट डायबिटिक, यू गेट हार्ट पेशेंट, ठीक है, यू गेट अ लंग कैंसर, ठीक है, यू हैव टू डू डायलिसिस एक्सेट्रा, यू गेट योर किडनी स्टोन्स. व्हाई? Because of these things, and they are slow poisons. ठीक है, and I, the virus made instantly. Let us take an example. Let's just say I have made a virus. ठीक है, X amount of virus or X name virus. Now I go with, okay, I tested with okay, approximately 1K people. Okay, I tested it with 1K people, and if we see that no, only 1K people are not on the earth, of course. Now, what happens is that when it goes to some people, this X virus goes to this Y people. Now, what happens? It will going to mutate. It will change its property. Now, its property changes. Now it becomes Z. Now it here, what happens? It again goes to again some another person. It will again mutate. It will become A. Now, what is happening? We know this, but you don't know this. You don't know this. What is this? What is this? Study, study, study. ठीक है? So if that happens, if some ingredient is mixed in your, I don't know what is that. Of course, we all know क्या क्या गलत है खाने में, क्या क्या अच्छा है. But if this is this happens, let us take example, हम कोई
फॉर एग्जाम्पल कोई नमक की बात करें, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेबल सॉल्ट और सम पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हम नमक की बात करते हैं, दैट इज पुट इन योर डाइट 50 years बैक, और आज डाला जा रहा है या 50 साल पहले डाला गया, जब मर्जी वो आज ठीक बिहेव कर रहा है, ओके गुड। योर बॉडी इज चेंजिंग और दिस इज चेंजिंग, दैट इज चेंजिंग, आई डोंट नो, बट व्हेन यू गोइंग विद दैट कि अगले 10 साल में it is, if it mutates, it changes its properties and becomes a poison. That is also slow poison, of course, and it is going to change again. Properties become the poisonous again very much before that. After that, it gives you a disease, and you will die because of that disease. What is that? This happens. People say कि ये नहीं खाना चाहिए. What does doctor say? You don't have to eat this X amount of. Why? Because they're dangerous at that time. Simply now. Coming to next. Now, high calorie intake. Many modern foods, especially junk foods and high calories. So this is basically to आपको obese बना दिया. You have the heart diseases, you have a fatty liver, etc. Excessive sugar content. What is this? This is candies, sodas, even more packets, snacks, जो भी है. See, people say कि sugar की वजह से जो है वो diabetes हो रही है. No, it's the carbs. The silent killer is the carbohydrates. ठीक है. What is the wheat? Wheat roti and chapati. What is that? It is a purely a carb which having a good amount of sugar. Okay, we don't feel it in this carbs. We don't feel it. Sugar just the table sugar just make our craving. ठीक है, बढ़ जाती है वो खाने की बार बार. ठीक है, then basically what happens if you are like if you're obese, आपको तो शुगर मतलब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्यों? अब कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हो, दे आर गोइंग टू स्टोर शुगर स्टोर हो जा रही है, आप यूज़ कर नहीं रहे. And of course, getting the diabetics, heart diseases, health issues, etc. Okay. Saturated and trans fats. Basically, fats खाने चाहिए, but they are unhealthy. ठीक है. हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट डिजीजेस जो भी हो रही है, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं पता लोगों को. ठीक है. जंक फूड. व्हाट इज जंक फूड? जंक फूड इज नथिंग बट just combination of a sugar, easily digest carbohydrate part. They are storing or like वो store हो रहे हैं carbohydrates. They're not like कि आप यूज हो जाते हैं. ठीक है. Of course हो रहे होंगे, but I'm saying कि most of them are storing. और उस that lack of what? Vitamins are not there in this. अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि vitamins नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल नहीं है. The amount you have to get through this food है, एक certain calorie amount होता है दिन का. For example, a person has to take 1500 calories a day. It is prescribed to him. Then he should be balanced with this vitamins, minerals, fibers, carbs, protein, ठीक है, whatever it is, microminerals, etc. जो भी है. But if you are taking junk food directly, for example, a burger has 300 calories. What is the amount of protein it has? Around 10%? No, I don't think so. If it doesn't have paneer, etc. I don't think so. Even 10% of the calories consisting of like 30 calories, or you are getting around. If you say if I say 10% is just the protein out of 300, it's around 30. It's just a 30. What we say? 30 calories you're getting from the protein, and I don't know. 30 calories of protein gets you 1 to 5 grams of proteins only. Even even if you see, if you get soya chunks, you will get even 50% of protein through that. And it is 52, I guess, but if you take 50%, if you eat 300 gram of soya chunk, it will give you 150 gram of protein. Around, I'm saying just an example, around 150 gram. So these are what they are giving. They are junk food. Burger is low in everything: vitamins, minerals, fibers.
The of course carbohydrates are there that is going to stored in your body and giving you the cholesterol, the heart disease, etc. Moving next, additives and preservatives. So बोलने की ज़रूरत तो है नहीं इस चीज़ में क्या चीज़ है ये. So this is the processed foods and artificial additives. So आज के लिए धोखा बहुत हो रहा है, ठीक है. What is this artificial additives? शुगर को सुक्रोज लिख देना. Even that is another form of sugar, ठीक है. So it is going to of course. So नाम के धोखे हो रहे हैं basically. Have you seen the packet of sugar free? What is written in the, I guess I don't know कहाँ पे लिखा होता है. This product doesn't. I guess I have that. I'll show you. Just a moment. Okay, I don't have this right now, but what is written on the packets? This the name doesn't specify its property. Okay, लिखा शुगर फ्री है, बट नीचे छोटा करके लिखते हैं दिस नेम डजंट स्पेसिफाई इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, मतलब शुगर फ्री नहीं है वो. ओके, नाउ लेट्स गो. दिस इज इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. अगेन भाई कर चुके हैं. एडिटिव नेचर. तो एडिक्टिव नेचर इज समथिंग लाइक कि अगर आप कुछ खाते हो, शुगर खा रहे हो, तो जंक फूड खा रहे हो, इट इज लाइक आपका इंसुलिन ना आपका एकदम से स्पाइक करता है ऐसे. दिस गोज लाइक दिस, अप डाउन अप डाउन. व्हाट इज दैट? तो ये तो आपने खा लिया. दिस गिव्स यू अ क्रेविंग. अब दोबारा खाओ उस चीज़ को. दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग. ठीक है. मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ कोर्स. सो आर माधव एंड वन सेट कि जो आप खाते हो वही हो. ठीक है. सो डाइट बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू योर डाइट. आई एम नॉट सेइंग कि इसको हाईली प्रोफेशनल बना दो, बट यू शुड मेंटेन इट. ठीक है. सो सम ऑफ देम फूड्स आर लाइक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. ऑफ कोर्स डिप्रेशन, एंजाइटी. नाउ एनर्जी स्पाइक्स एंड क्रैशेस. जैसे कि शुगर है. शुगर इज अ हाई एनर्जी फूड. ठीक है. तो इफ यू सी द आर्मी और समथिंग दे गेट द हलवा पूरी. व्हाई? They have to do intensive tasks during the probation periods and after that. So they need that. What happens is that their body is demanding energy. ठीक है. They can't eat complex carbs and run. They just eat burst of energy comes through the sugar, halwa, suji, ठीक है, and the puri itself. But as a normal human being, these energy spikes are not necessary. ठीक है. मतलब you don't have to do that. ठीक है. Blood sugar level, if you are going to spike is again, you should be balanced. ठीक है. It should be like this. If you don't take sugar for 14 or 15 days now, first these 3 or 7 days are very difficult. Now after that you will did not crave for sugar. This is the period you have to save yourself. Hidden ingredients, that will I'll not discuss it more because ये आपको इफेक्ट डालने ही वाले हैं बहुत. ठीक है. हाई फ्रुक्टोज, हाई सोडियम, कॉर्न सिरप, ये तो बेसिक हैं जो सामने आ जाते हैं. जो नहीं आते वो नहीं बताया जाता है. दैट इज अनदर. बोन हेल्थ इम्पैक्ट. सो हाई सोडियम वाले, लो कैल्शियम वाले ऑफ कोर्स. Obesity we have done, the heart disease and stocks, diabetes we have done. ठीक है. देखो, रिफाइंड शुगर तो बोला ही बोला गया. कार्बोहाइड्रेट दैट आई सेड सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं. ठीक है.
Digestive issues we have done, bone health we have done, chronic inflammation. तो consumers हाई अनहेल्दी फूड जो खा रहे हैं फैट्स एंड शुगर तो chronic inflammation बढ़ रही है उससे. ठीक है जैसे कि अर्थराइटिस हार्ट अल्जाइमर ठीक है मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है लोगों की. Again I said ना कि what you eat you will that become that person. Now, now again the diseases are fatty liver, reduced immune, hormonal imbalance, are addicted and overeating, increased cancer, dental problems, metabolic syndrome, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी कम होती जा रही है. So this is about the generation warfare. So this is I'll just explain this in just one word if I have to explain. This is nothing but the slow poison you are eating. Okay? I'll just explain this in just one to two words. Full video. Choose your diet very properly. ठीक है you can't be 100% satisfied with your diet of course कि आप बहुत अच्छा ही खा रहे हो but we have to put these filters कि अगर आपके पास 100% गलत आ रहा है of course कुछ आपके पास आ रहा है तो आप उसको फिल्टर आउट करो. ठीक है कि ये गलत मैं नहीं खाऊंगा मेक इट 20% बट बेटर. ठीक है ओके. Now for now I think it is enough. So we'll do it also later. Thank you for watching my